हेलो, आपका स्वागत है आईवे रूबरू में। मैं हूं शबा मंजूर और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि दृष्टि खोना सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि एक मानसिक यात्रा है। हमारे साथ है प्रतिष्ठा, जो एक एज एन असिस्टेंट मैनेजर एसबीआई में काम कर रही है। हेलो प्रतिष्ठा, आपका स्वागत है आईवे रूबरू में। प्रतिष्ठा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने अपनी दृष्टि कैसे खोई और वो फेज़ कैसा था आपकी लाइफ में? व्हेन आई वाज 2 और 3 इयर्स ओल्ड मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरी विज़न में कुछ प्रॉब्लम है एंड अल्टीमेटली दे फाउंड आउट कि मेरी विज़न बहुत ज़्यादा वीक है। बचपन से कुछ प्रॉब्लम तो थी एंड बट मैं मोर और लेस इंडिपेंडेंट थी। आई वाज रीडिंग एंड राइटिंग ऑन माय ओन, आई यूज्ड टू नेविगेट अराउंड ऑन माय ओन बट अल्टीमेटली ग्रेजुअली क्या हुआ, मेरा रेटिना वीक होता गया एंड व्हेन आई वाज 12 years old मेरा लेफ्ट आई का रेटिना डिटैच हो गया एंड मेरी लेफ्ट आई की विजन चली गई व्हेन आई वाज समवेयर अराउंड 12 or 13 years old. Something similar happened when I was around 17 years old in my right eye. मेरे राइट आई का रेटिना भी डिटैच हो गया and over the years from 2012 मेरी vision gradually deteriorate होके I lost it completely in 2020 when I was 26. प्रतिष्ठा, तो जब आपको पता चला कि अब आपकी विजन लॉस हो गई है, इट विल नेवर कम बैक, सो सबसे डिफिकल्ट क्या था एक्सेप्ट करना आपके लिए? If I talk about the challenges of disability, they are numerous. Firstly, that goes without saying that आप physically बहुत suffer करते हो, your independence is impacted, and but more than that, जिस बारे में जो एस्पेक्ट मुझे लगता है थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, दैट इज द इमोशनल ट्रॉमा दैट वन सफर्स. Yes, everybody was talking about rehabilitation, everybody was talking about moving on and adapting to this new life, but जो सबसे पहला चैलेंज जो मेरे साथ आया था, that was that I had these mental blocks and emotional barriers जहाँ पे I was simply not ready to accept my disability. कुछ भी करने के लिए it's really important that you accept your disability and it took me a long time to accept my disability. प्रतिष्ठा, और क्या-क्या मेजर चेंजेस आए आपकी लाइफ में और आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डील करने में मुश्किल हुई? Yeah. I can go on this. So ये एक complete transformation था where I was stepping into a altogether into a different world and बहुत सारे changes आए, मेरे बहुत सारे decisions इससे influence हुए मेरी disability से. So for example, if I talk about my aspirations and my professional aspirations, तो मैं हमेशा से साइंस पढ़ना चाहती थी. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी साइंस, biology to be precise, but उस टाइम पे due to lack of awareness, me and my parents were absolutely clueless about screen readers and कैसे एक visually impaired individual साइंस पढ़ सकता है, बिकॉज एट दैट टाइम द परसेप्शन वॉज, आई थिंक ये परसेप्शन अभी भी है बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट थिंग्स आर चेंजिंग, बट उस वक्त तो कम्प्लीटली ये परसेप्शन थी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल साइंस कैसे पढ़ेगा. सो ऑफ कोर्स आई हैड टू drop the idea and I went for humanities. I do not regret because I love humanities equally. एंड ऑल्सो जब मुझे कॉलेज में सब्जेक्ट चूज़ करना था तो मैं इस बेसिस पे सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं कर रही थी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. मैं इस बेसिस पे सब्जेक्ट्स चूज़ कर रही थी कि मैं अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ क्या-क्या सब्जेक्ट्स मैनेज कर पाऊँगी. इफ़ आई go a little bit into my emotional journey, I remember when I lost my sight completely. For a couple of days, I was even afraid of opening my eyes once I used to wake up in the morning. मुझे ये थॉट बहुत हॉन्ट करता था कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं. It will be dark. So it was
a very, very miserable and distressful phase for me, to be very honest. It took a lot of efforts. I had to push myself a lot. ये changes और transformations सिर्फ positive नहीं होते हैं, negative भी होते हैं. I was left to grapple with my insecurities, with my anger management issues. I had this constant feeling of being a burden on my loved ones, a feeling of being not wanted. So yes, and ऐसा नहीं है कि ये इमोशंस अभी नहीं आते हैं. They keep reoccurring with time, but it's just that you have to keep yourself going and you have to keep pushing yourself, and you have to keep going in life. प्रतिष्ठा, तो जब से आपका विजन लॉस हुआ है, उसके बाद क्या एटीट्यूड में डिफरेंस आया है लोगों की, जो पहले था, जो बाद में था? आस-पास के लोगों ने आपको कैसे ट्रीट करना चालू किया है? एंड उसके बारे में आपका क्या कहना है? So that's an interesting question. If I talk about people's attitude towards us, हम लोग बहुत अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं. कुछ लोग बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, कुछ लोग बहुत सिम्पैथेटिक होते हैं. Some people are just casual, but yes, we end up meeting a lot of people, and especially I am someone who is in the service industry. I am into dealing with customers. तो मुझे तो बहुत तरह-तरह के लोगों से इंटरैक्ट करना होता है. कुछ लोग हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट देके जाते हैं दैट हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग इतने चैलेंजेस के बाद भी इतना काम कर रहे हो. कुछ लोग होते हैं जो हमें who think कि हम लोग उनका काम कर ही नहीं पाएंगे, तो as soon as they discover that I am visually impaired, वो मुझे छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, किसी और काउंटर पे चले जाएंगे. तो the attitude of the people vary, and but one thing I want to say is that often people walk up to me and people like me and say कि आप लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं. But of course I respect their thoughts and their emotions behind this, but initially it feels nice. कुछ एक extent तक अच्छा लगता है, but beyond an extent it feels that no, I don't want to be an inspiration for anyone. I just want to live a quote unquote normal life, and yeah, but at the same time I respect their emotions. Yeah, that's about it. थैंक यू प्रतिष्ठा, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस आईवे रूबरू का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद. मैं हूँ शबा मंजूर. मिलते हैं आईवे रूबरू के अगले एपिसोड में. धन्यवाद.